वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग बंदे के बारे में जिसका नाम है लकान। ओके। सो लकान जो है एक फ्रेंच साइको एनालिस्ट था, पोस्ट मॉडर्निस्ट बंदा था। इसकी काफ़ी ज़्यादा बुक्स आई हैं। लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है। पर लोग यार किस हद तक सोच सकते हैं, लाइक I'm really amazed. So we'll talk about Lacan later in this video, but I came to know about this a concept by the name of Jouissance, but it's not called Jouissance, it's called something different. So मैं आपको बताता हूँ कि Jouissance क्या चीज़ होती है. Okay, so how to say this? Means physical or intellectual pleasure. Let's say it all together. Jouissance. Jouissance. Okay, jouissance. Okay, so this is how it you pronounce it. So भाई क्या चीज़ है ये? So jouissance is a French term, literally means enjoyment. ठीक है? Enjoyment not in the sense of pleasure, okay, but somehow it literally means pleasure. Okay, so it is beyond pleasure principle, uh, but in philosophy and psychoanalysis, especially in Jacques Lacan's work, it takes on a much more complex, even paradoxical meaning. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोले एवरीडे मीनिंग का, तो इसमें ये है एक फ़िज़िकल प्लेजर, इन्जॉयमेंट और जनरल सेंस एंड इवन सेक्सुअल क्लाइमैक्स. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लास्ट में जो it's how should I say, orgasm. So Lacan's psychoanalysis क्या चीज़ है? For Jacques Lacan, jouissance is not just a simple pleasure, it's kind of intense transgressive enjoyment that goes beyond the pleasure principle and can even become painful. Okay, so the mind tends to seek pleasure and avoid pain, but jouissance goes beyond it. It's a kind of ecstasy that can involve suffering because it pushes the body or the psyche past its limits. So jouissance is suffering in pleasure and pleasure in suffering. जैसे कि हम बोलें कि हम चाय पीते हैं, तो जो चाय पीते रहते हैं, it is also like a writer compulsively working all night, exhausted yet unable to stop because it's too good. ओके. सो अगर हम बात करें इन पोस्ट मॉडर्न एंड कल्चरल थ्योरी, राइटर्स राइटर्स लाइक रोनाल्ड बार्थ्स use joints in literal theory to mean, for example, the bliss or ecstasy of a text that disrupt our expectation, break a language convention and produce both delight and discomfort. कि भाई आपको थोड़ा थोड़ा अनइजीनेस भी होता है, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा लाइक डिस्कम्फर्ट होगा आपको, पर मज़ा भी आएगा. सो इट्स काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप समहाउ. सो इन इन बार्थ अगर हम इट्स रोलन बार्थ की बात करें, सो उसकी एक बुक है जिसका नाम है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट. उसमें वो दो चीज़ों की बात कर रहा है, ठीक है. एक का नाम है PLASIR, प्लाइसिर. ये कंफर्टेबल होता है, comfortable pleasure, and then comes the comfortable, या फिर इसको ऐसे बोलो कि aligned pleasure, ठीक है. where joints is more radical, shaking the reader, मतलब आपको हिला के रख देगा, ठीक है. So writers like Roland Barthes use joints in literal theory to mean
like bliss and ecstasy. So jouissance is pleasure beyond pleasure, an intense and often disruptive enjoyment that can border on pain, excess, even self destruction. It's a crossing of limits where satisfaction and suffering mingle. ठीक है, satisfaction and a mingle, joyance goes beyond. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि भाई writers completely work all night exhausted yet unable to stop because it's so good. ओके अब इसे इसको हम और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लाइक वेदर इट्स अ फिलोसफिकल और साइको एनालिटिकल. सो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो फ्रॉइड की लकान जो था काफ़ी बड़ा एडमायरर था फ्रॉइड का. सो इट डील्स विद डिज़ायर, प्लेजर, लिमिट्स ऑफ प्लेजर, ह्यूमन नेचर, कि कहाँ तक हम थ्रेश होल्ड रीच कर सकते हैं, हाउ वी रिलेट टू दी पेन एंड प्लेजर बियॉन्ड लाइक rational controls. Um, okay, so ties into ethics, what is good we seek. Okay, then अगर हम लिंग्विस्टिक की बात करें तो रूरल बात एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जॉइंट्स बिकम लिंग्विस्टिक लिटरल कॉन्सेप्ट. ठीक है, अगर हम ये बात करें, लकान himself was a psychoanalyst. Psychoanalyst. यार ये क्या हो गया. Lacan himself was a psychoanalyst but used a linguistic structure to explain the unconscious. ओके इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. एंड so Lacan enjoins is both philosophical theory of desire, linguistic structural thought signifies language limits. So if I talk about in philosophy and psychoanalysis, it's about the human condition, desire and transgression, pleasure. If I talk about linguistics and literary theory, it's about the way language and text can provoke intense, disrupt and enjoyment. कि भाई द थिंग इज़ कि आपको क्यास में भी मज़ा आता है, वैसे ही this is something like that only. So as the meaning keep on shifting, chaos is happening every now and then. So this is the same concept. So I will try to relate this word with other subjects. This word with other subjects. Example. Okay, so in philosophy, jouissance is an jouissance is the ecstasy of going beyond the limit, the sweet spot where pleasure and pain merges. If I talk about ethics, okay, so ethics में okay, अगर मैं ethics की बात करूँ, so Aristotle spoke of uh, the word called as eudaimonia. Okay, so it means flourishing. Okay, as balance, but yeah, jouissance ignore balance. It seeks intensity even if डिस्ट्रप्टिव. यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है. ठीक है, इसका मतलब ही बैलेंस होता है. ठीक है, अगर हम एथिक्स की बात करें, अगर हम नीचे की बात करें, तो इसको नीचे बोलता है
the Dionysian Dionysian spirit. SPI Dionysian spirit की बात करते हैं नीचे. Losing oneself in chaos and ecstasy. ओके अगर आप if you Google it, Dionysian spirit is really fascinating thing. Losing oneself in chaos की surrender कर देना अपने आप को, ठीक है, and in ecstasy. uh, the Jouissance before Lacan named it. uh, ठीक है. जो JOUISSANCE जॉयसेंस जो है एक वर्ड का नाम है जो लकान ने दिया था, LACAN ने दिया था. वेर एज डायनोजियन स्पिरिट जो है वो नीचे का ही दूसरा नाम है. अगर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म में जाएं, ओके, इफ वी गो टू द एग्जिस्टेंशियलिज्म, if you go to the existentialism, कीरकेगार्ड लीप ऑफ फेथ. ओके, सो कीरकेगार्ड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था लीप ऑफ फेथ. लीप ऑफ फेथ गाड़ी चाबी दो नहीं. मैंने को लेनी. लीप ऑफ फेथ और कंपसेस एब्सोर्ड जॉय इन द फेस ऑफ मीनिंग. कंपस का ये कीरकेगार्ड ने दिया था. अगर हम कंपस की बात करें तो ये बोलता है एब्सर्ड जॉय. ओके, लीप ऑफ फेथ कहाँ पे? इन दी फेस, जब मुंह के सामने मीनिंगलेसनेस आए, ठीक है, मीनिंगलेसनेस आए, ठीक है. बोथ आर स्टेप इनटू डिस्कम्फर्ट दैट इज आल्सो both are a step into discomfort that is also ecstatic. ठीक है, अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल की, वन फिलोसफी का ये हो गया. ये फिलोसफी की बात है. अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो in psychology, joyance is a paradox of pleasure principle. Freud said we seek pleasure and avoid pain, but some pleasure, for example, jouissance contains pain. इसमें दर्द भी होती है पर अच्छा लगता है. ओके, ये फ्रॉइड का है. ओके, देन it explains a self-disruptive habit we can't quit. Because they bring an intense high, for example gambling, obsessive love, extreme support, जैसे हॉकी या ये सब चीज़, ठीक है. अगर हम न्यूरोसाइंस ट्रांसलेशन की बात करें तो जॉयंस happens when dopamine reward meets adrenaline stress, ठीक है. तो ये वही चीज़ है जिसको बोलेंगे where dopamine reward meets adrenaline stress. Creating a cocktail that feels irresistible, ठीक है. अगर हम इसको बात करें
psychological. Okay, if I compare this with the Nataraj dance, if I compare this with Nataraj dance is creation. Nataraj dance is creation. It's preservation and destruction at once. Destruction at once, a perfect metaphor for jouissance, where uh, creation equals to pleasure, destruction equals to pain. The dance, both is unity and extract. It is called as, and इसको बोलेंगे एन ECSTATIC, an ecstatic play where pain feels pleasure and pleasure feels pain. Where Shiva dances, he is not avoiding destruction, he embraces it. Okay, embracing, or a, it's called as embracing. Embracing destruction. He embraced it as a part of cosmic bliss. This joins as the this embrace is called as, इसको बोल सकते हैं as a cosmic bliss. This joins at the rapture of life death intertwining. अगर हम इसको कंपेयर करें बटरफ्लाई इफेक्ट के साथ, तो ये आता है tiny causes massive effect. Relate to jouissance is how small action can split into the overwhelming and chaotic experiences. In desire, a small trigger, a word, look, and memory can cascade into the objective longing and ecstasy. The initial butterfly wing is a helpless pleasure, but the storm is triggered. The overwhelming jouissance can be a life-changing, even destructive. Both are about crossing threshold where control is lost and new. अगर हम बात करें इसको philosophically point of view से, तो philosophy gives joins its uh, ethical and existential weight. ओके, अगर हम फिलोसफी की बात करें, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, तो एक्सप्लेन इट्स पैराडॉक्स इन ह्यूमन बिहेवियर. अगर हम इसको नटराज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शोज इट एज अ डिवाइन एंड रिदमिक यूनिटी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन. अगर हम इसको बात करें बटरफ्लाई इफेक्ट की, तो shows how the tiny movement can like escapes into all consuming ecstasy. Thanks.